वैसे कोरोना में यार being locked up for so many, how did that affect you? भाई it was confusing at first because मैं इतनी outgoing हूँ and पूरा वक्त दोस्तों के साथ हर जगह बाहर ही होना and suddenly you're just stuck at Do you do extracurricular activities a lot? I don't. You don't? I just started kickboxing. Oh shit. मुझे डर लग रहा है नहीं अभी सही अभी है। बस 3 क्लासेस हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुआ but it is amazing. किक बॉक्सिंग, Yes. ये कहाँ से आपको मर्दों वाला शौक एकदम से आया? मर्दों वाला शौक नहीं है ये अच्छा, खवातीन करती है किक yes बॉक्सिंग? मैंने तो नहीं yes पहले सुना था इस तरह। करती हैं. It's I have like कम क्लास के अंदर कम लड़कियां हैं लेकिन हैं ज़रूर. It started with just working on myself ही. तो I was like फिजिकल फिटनेस टाइप, हेल्थ वगैरह it टाइप। was just कि okay लॉकडाउन के अंदर I think I won't call it a depressive state लेकिन काफ़ी sad वाला state था जिसके अंदर I was just kind of not eating right और फिर रमज़ान भी बीच में आ गए थे जिसकी वजह से इतना खा नहीं रही थी and then I lost a lot of weight like मैं 70 से 55 हो गई. What? Yes. I didn't notice, sorry. Everyone noticed. Everybody the, my noticed. most I think because asked I get question, this. हाँ, I probably. get this on the screen. But my most asked question is कि how did you lose weight? And I honestly don't know how I did because मैं बस लेटी रहती थी घर पे. But उस वक्त I realized कि okay That's I how you am. did it. You लेटी रही बस. But then I realized कि यार नहीं इतना अगर मैंने lose कर लिया है तो strength भी साथ गई होगी. And when I started picking up things I couldn't pick up like मैं फिर दोस्तों के साथ cycling पे जा रही थी उधर भी मैं बस इतना सा साइकिल करती थी और यार रुको ना थक गई मैं. And I used to like sit down, take a break and then cycle again और उससे I realized okay stamina सब वगैरह strength सब कुछ चली गई है अब कुछ नहीं बाकी मेरे अंदर. Yeah. तो my friend recommended कि ओ मैं kickboxing पे जा रहा हूँ तो I was like यार मुझे भी आना है. Might be a fun thing to do. मतलब कि पैर मारते हैं दूसरों के सरों पे, पैर और punches. वायलेंट सी चीज है। काफ़ी वायलेंट है. इट्स नाइस आपका एंगर सब निकल जाता है. अच्छा, एंगर है? काफ़ी है. एंगर इश्यूज हैं? काफ़ी है. एंड इट्स यूजुअली कि मैं खुद पे ही निकाल रही थी मुझसे किसी और के ऊपर गुस्सा नहीं निकाला जाता. तो इट्स लाइक कि इट्स हार्ड व्हेन इट्स आप खुद पे ही गुस्सा निकाल रहे हो यू ब्लेमिंग योरसेल्फ. तो इट्स नाउ बेटर कि मैं दूसरों पे निकाल, वो होता है पैड होता है उनके हाथ में उसी पे ठप ठप हो जाए जैसे ठप ठप शुरू हो जाती हूँ. एंड इट्स जस्ट स्टार्टिंग डेज अभी तो just basic punches वगैरह हैं. My only thing with a hobby like that is कि at some point it's very good for your health. Yeah. But एक वक्त आता है जब वो actually आप जब punches मारते हो concussions होती हैं तो then it's bad for your health. It's bad लेकिन I think वो फिर उसमें आते हैं when people take it on a professional level. Yeah. Like वो फिर जब actually fighting कर रहे होते हैं. Yeah. इधर तो just Sparring training. है. Yeah, it's sparring, right? So Yeah. that should be fun. Yeah. Huh. Well, so 1 year you're going to work on yourself. Yep. You got a BCD. I got a ABC. You got an ABC? Yeah. Oh, the A was in Urdu. Yeah. तो उर्दू को तो कोई काउंट ही नहीं करता ना पता नहीं क्यों. They're like कि उर्दू A level Urdu is hard, man. It's not that What did you read? मीर तकी मीर type? मीर तकी मीर थे, अल्लामा इकबाल थे, फैज़ थे. Oh. And I forgot. So what did you have to do? Like write the poems down, or was the नहीं questionnaire? नहीं honestly इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी because कोरोना आ गया बीच में तो वो प्रैक्टिस तो भूल ही गई कि पास पेपर्स दिखते भी कैसे हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं. बट सिलेबस में देयर वर तशरी वगैरह एंड कॉम्प्रीहेंशन चीज़ें थी. आई थिंक दैट्स लाइक बचपन वाली चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन वाली तो. बट जो नज़में थी मुश्किल थी समझ. लेकिन आई गॉट अ रियली नाइस टीचर. तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन कराची. तो आई गॉट हर एंड मुझे तो अभी भी मीर तकी मीर नहीं समझ आता. मुझे समझ आ गए हैं वो. मुझे अल्लामा इकबाल भी नहीं सही तरह समझ आता. मुझे अल्लामा इकबाल मुझे भी नहीं आते. अल्लामा इकबाल इज Heavy. सम अदर लाइक वो अलग शिट है. फारसी है उसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक. यस आल्सो लाइक माय टीचर हैड आई थिंक उन्होंने एमफिल किया हुआ है फारसी में तो शी अंडरस्टूड स्टफ एंड शी लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर हैड. तो What do you think about your teachers? Like, female role models in a sense then? I You're- won't say female role models because I'll say कि academic Academic हवाले. academic Yeah. academic हवाले से
if I look into my teachers, like उन्होंने बहुत encourage किया एक तरीके से, because I am not that smart, I guess, या मैं अपने आप को बहुत dumb कहती हूँ because I don't enjoy studying. Like This is what you're going to work on when you're Yeah. taking that gap year. हाँ, Because think- you're not dumb. I Very few people at your age accomplish what you've accomplished. So that's... think मैं okay. सही है. This is true. I'll give you that. लेकिन फिर again like मुझसे नहीं पास पेपर्स होते बिल्कुल भी, मुझसे नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता सही से. क्वेश्चन को आंसर करना जो वो मेन पार्ट होता है ना जिसमें यू कैन एक्चुअली स्कोर, आई एम डम एट दैट बिकॉज मुझे समझ नहीं आता. मैं अपने वे में लिखूँ ना तो वो अच्छा नहीं होगा. दैट्स लाइक आई नो दैट फॉर श्योर. Yeah. Because there are like steps that I have to follow. I don't like following stuff. अगर कोई मुझे बोले ना ऐसे करो तो मैं उसका opposite करूँगी. And that type. Similar. Yeah. You're reactive that Yeah. way. You have problems with authority? A lot. Yeah. Like मेरे घर में मैं बड़ी हूँ सबसे, तो उधर ही अथॉरिटी मिल जाती है ना कि सबके ऊपर अथॉरिटी है, हर किसी पे बस मैं but I think I'm growing into that and changing it also because Yeah. it's something very like आगे जाके मुश्किल होगा because if I do अभी भी ना मैं I am my own boss, like no one has to tell me कि ये पोस्ट करो ये करो. Yeah. तो अभी भी ना वही वाली चीज़ चल रही है, लेकिन at some point someone will be my boss probably. I don't know. You I never don't know. I mean, if I also had problems with authority, and then I became I chose the sort of job that would let me allow me to be the boss. वही. तो मैंने कभी मुलाजमत की नहीं जिंदगी में क्योंकि मुझे यही मसला था कि मुझे कोई ऑर्डर दे. लेकिन over the years, I've learned a few tricks to not get angry and react at someone giving me an order. हाँ. So what I do is, like, you know, so we have clients and Say, sponsors, oh right? God. And they'll say, if your video में ये change करो, video में वो change करो. So, and I think वो Patangir was also talking about this. Like when they say ये change करो, तो शुरू में हो जाता है आपको क्या पता है? Yeah, true. And I type it all. And I don't press the send button. It I takes do. everything out. You send. I send I them. wait for the send button. अच्छा. And then I backspace it all. And then I go like, goose flabba. अच्छा, मेरे साथ ही सेम होता है. तो I have people like who do the negotiation for me. Like मुझसे वो वाली बातें नहीं होती. But I know what I want to make. If they are sent, वो एक content brief आ गया, चलो मैंने पढ़ लिया देख लिया. Yeah. If I don't like something, I will tell them कि मैं ये नहीं करूँगी. And then they work out stuff. And then they say, okay, do whatever you want. And if they say कि नहीं हमें ऐसी चाहिए तो okay, I'm not going to do it. Yeah. So it's very simple for me. अगर आप flexible What हो if they रहे हो, have you make the video and then in the editing phase they... oh भाई, I don't change. You don't मगर change? यही है, यही है. पकड़ो. और अगर वो कहें तो फिर पैसे कहाँ जाते हैं? पैसे नहीं आते. आ जाते हैं. आ जाते पैसे फिर भी आते. Okay, एक ही बार हुआ है मेरे साथ ये. कि पैसे नहीं आए. नहीं पैसे आए हैं. पैसे हमेशा आए. The change वाली thing एक बार हुआ है. Mostly approve हो जाता है, but one time I think I won't take the name. No, of course, that's not a good idea. खैर मैं तो ले लेती हूँ. खैर I did चलो, this take the name, thing. I don't mind. No, I'm not taking the name. I had this like campaign with them and उन्होंने बाद में बोला कि आपने तो किसी और प्रोडक्ट को भी डाला हुआ है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है. तो I was like it was just part of the video और मैं कोई उनको प्रमोट नहीं कर रही थी, वो बस बैकग्राउंड में आ गया था. like it's not a big deal. और मैं Competitor तो इतना- नहीं था कहीं? Competitor नहीं था. Why do they care? I don't know, they just उनको organic? pinpoint करना होता है सब. Yeah. खैर तो I was like कि भाई I don't think it's a big deal. Yeah. तो they were like no but we need it and हमेशा इन्हीं के साथ होता है. अच्छा like सही है, पहला वाला चीज़ तो they let it go. अब दूसरा I was an Instagram post. Okay. तो उसमें they were like अच्छा मैंने उस वीडियो में ना मेरे घर के बाहर बहुत आवाज़ें होती हैं, कभी बाइक वाला जा रहा होता है, कभी सब्ज़ी वाला. तो उधर सब्ज़ी वाले अंकल जा रहे थे तो मैंने उनको ना शट अप बोल दिया. सी ना लाइक टू मेक इट अ लिटिल ह्यूमरस, आई डोंट नो. एंड मैं बोल देती हूँ बट शट अप इज़ लाइक माई थिंग व्हेन समथिंग पासेस ऑन नीचे से. Yeah, I've seen that. तो मैंने बस बोल दिया शट अप. एंड देन मैंने जब वो सेंड की उनको वीडियो फॉर अप्रूवल, दे वर लाइक रिमूव द शट अप. Like that's the humor. That's You're removing the laugh. अजीब. खैर आई रिमूव्ड इट. आई वाज लाइक खैर शट अप भी है. तो So you did listen. So that's good. You're I learning. did listen. It's इधर में होती है okay, I did listen. I don't know. लेकिन mostly I like the won't. shut ups.
I would, if I was your manager, I would have fought for the shut up. Yeah. But then, money sometimes can overweigh my opinion. Yeah. And this is YouTuber life, having to balance these things. But fortunately, you're not stuck with bills yet. Alhamdulillah. 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 I don't have the. So what are you going to major in when you do apply abroad or here? Or I what really are you want gonna, to do psychology. do you want to go buy? You want to stay here? What do you want to do? I need to stay here. You need to stay here? I cannot leave Your Karachi. friends now, you have so many friends in social and मेरा कराची ना I'm okay. This is one thing about me as well कि मैं अपने comfort zone से नहीं निकल पाती. बस जहाँ पे भी uncomfortableness मुझे दिखेगी ना कि मैं comfort zone से निकल रही हूँ अब मैं उधर ही रुक जाऊँगी. जैसे अभी we were like before starting we were talking about me editing on my phone. yeah. कितने साल हो गए I haven't tried anything new because this is what I'm comfortable with. That's fine. I Yeah, think that's that's a good fine. idea. And I don't लेकिन- think that what you're saying is true, but I will refute you later. Go on. अब अच्छे से है फिर ना अब the thing is कि अब मुझे इतना आदत है कराची की कि this is my comfortable space. हाँ. If I even go to Islamabad या लाहौर ही for पढ़ने I don't think कि मैं कर सकूँगी. Like, Islamabad could be nice. I don't like You don't Islamabad. think It's too quiet. Imagine the vlogs. It's Too quiet. It's too quiet. हमें मेरे especially where I live it's too chaotic and मुझे बहुत आदत है आवाज़ों की like constantly कुछ ना कुछ आवाज़ हो मेरे कानों में. Yeah. I cannot be in silence. Like अभी भी जो silence है ना वो मुझे कुछ कर रहा है. कुछ disturbing सा लग रहा है कि मेरी आवाज इतनी क्यों गूंज रही है. हाँ असल में से गूंज But रही I है. don't really think you like so just an opinion on you. I Yeah. don't think you have a problem with your comfort zone because you'll come to like public in front of people doing meetups, coming I'm to the not socially uncomfortable. you're not socially uncomfortable. No. That's just natural for you. That's really easy for That's me. out of my comfort zone. Say my I feel comfort like- zone is the place I am in. That's like क्योंकि I hate traveling. I don't like planes. मुझे इतनी extreme anxiety होती है मैं Lexotonal लेके जाती हूँ अपने साथ कि बस उल्टियों पे उल्टियाँ हो रही होती हैं मेरी and I am just Oh. really bad with Motion traveling. sickness. Do you have It's the same not thing when really- you're in a boat? I don't like water as well. You don't like Boat तो water. I keep myself away from the sea. Even कहीं You're a भी- land animal. yeah. Land animal हूँ मैं भाई. I hate planes. I hate the sea. I just like the land. तो मुझसे traveling तो होती नहीं है. And especially if I'm traveling alone तो एक और ये भी बात है कि I cannot leave my family behind. Like this is one thing कि बस constant मुझे अम्मा और मेरा भाई चाहिए. Like this is a thing कि और बस मेरे लोग मेरे पास होने चाहिए. I need to feel close to them. Yeah. वरना मुझसे नहीं होगा. Even like my best friend lives like 5 minutes away from me. तो कभी भी कुछ भी हो like I'm there at her place almost like twice a week, thrice a week. कभी भी उठ के चले जाओ. If I go out like बाहर पढ़ने maybe it's like just out of the city. I won't have that thing कि मैं कभी भी उठ के चली जाऊँ. Yeah. And I need that. I've traveled so much that I understand it to a certain degree. I've been so lucky with my friends. I don't know क्या है ये. I I'm would same. I don't want to sound like I love my friends. Your by the way. friends are like भाई क्या हो गया है बे? But कुछ दोस्त कुछ ऐसे Yeah. और plus the idea that in Lahore I felt like मेरी को motivation नहीं थी. So I left Lahore to come to Karachi because I wanted to change Sahi. that one rut of a routine. सही. But if you have a good one, Yeah. you seem to have a good one. I do have a good one. I Well, keep think it. अभी तक I have a good one because like पता नहीं मुझे लगता है मैं बाहर जाके बहुत सीखूंगी if I do start to live alone. Obviously that's a whole another level of responsibility Yeah. which I'm like not good with. It's as simple as doing your own laundry and vacuuming your own ये नहीं place. होता ना ये नहीं होता. नहीं होता. You don't do any of this. Nope. मेरा खाना भी ना बेड पे आता है तो आई एम वेरी पैम्पर्ड इन दैट केस तो दैट्स वेयर द कंफर्ट जोन कम्स फ्रॉम कि यार मुझे तो खाना भी खुद बनाना पड़ेगा लॉन्ड्री भी खुद करनी पड़ेगी. Well, things change. But I think Momo, things are gonna change. But they will Even if you change. don't leave, at some point, at some point you're going to be Yeah. making food for somebody else. true in like that. I think I will be. Who knows? Who knows? But- Maybe he'll be the cook.
He should. No, Patangis or over, and Amtul doesn't cook and he cooks. I think I will choose someone who cooks better than me. Balance each other out. Yeah. He doesn't know anything about cameras or YouTube. हाँ, probably है ना? that's the part I think जो मुझे attract करेगा सबसे ज़्यादा. Yeah. Because having the same kind of energy around you is for me अजीब सा. हाँ, you might get competitive with each other. तुम्हारे views मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं, ये क्या Oh बात हुई? भाई. मेरे views तुम्हारे से कम आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? लेकिन it should be just के mutual support हो, I think. Yeah, yeah. I mean, yeah. Yeah. There's so many things that play a role, I suppose. मैं बहुत I'm like- baby हूँ इस scene में, like relationships या But you have friendships decided हो. that it's going to be one person I have decided and that. no trials No in the process. trials. I went through many trials. Yeah, I am not 4 gonna- long-term trials, others not mentionable trials. नहीं, And then I landed on the right person. I will just choose तमीज से एक ही को हाँ. और बस वही. फिर उस वाले को सही चूज करना पड़ेगा. That's the pressure थोड़ा सा कि यार सही कैसे choose करते हैं. You यार should help उस्मान me. रियाज ने बड़ा सही चूज किया. You know the artist who's from Mano Animation. He's making this anime cartoon. I He's the- have heard of Karachi. him. I have heard of him. Phenomenal artist. He's an amazing guitarist, etc. सही. And he chose supposedly like he found this girl. She was also an artist, and he went like, I'm going to marry her, and high school type level, Oh shit. and then he did. So I think I've seen things in arranged marriages work and fail, in love marriages work and fail. That's the There is no thing. right or wrong way. it's just कि नसीब अच्छा हो यार. Like हाँ. because you never know when things can go wrong. Like क्या पता freaking bore हो जाऊँ मैं. You know, you never फिर know. बोरियत के साथ रहना पड़ेगा because you decided I have decided on one only. one only. So you can add excitement. Yeah. I've seen like there's this couple that I used to know, and they started dating in high school, and they Sorry. got together and they loved each other, and then because as you're growing through high school and university, your personality changes so a much. lot. Yeah. Yeah, and in that process, you could be completely different individuals by the end of it. True. So, are you willing to change with each other or accept each other's changes? And how much flexibility does the other person give you? Do you feel suffocated? All of these things play a role. I So- think तभी high school वाली जो relationships होती हैं ना बहुत कम work करती हैं. Yeah. I've seen my friends like everyone around me dates like that's like such a normal thing. अब इतनी normal चीज़ हो गई है ये कि just everyone around me dates. That's why I don't want to date because everyone's doing it. You're a reactive person. I am a Basically, you're very counter-culturalist होता है. हाँ, full culture को मैं counter करूँगी. जो हो रहा है वो मुझे नहीं करना. वो नहीं करना. Yeah. But also there are like boundaries for me as well. I know it will lead to something that I don't wanna get into. हाँ. Because फजूल में time नहीं waste करना. हाँ. Because I've seen in front of me कि बस फजूल में जा रहे हैं लोग. यार लेकिन इस उम्र में ड्रामा का तो एक बड़ी अट्रैक्शन होती है जो ड्रामा उसके साथ आता है. Like I remember, like you know, like getting your heart broken. I wrote some of my best songs. You know. You could get a good blog out of it. लेकिन that's the thing. मुझे लगता है मेरे दिल ना कहीं और टूट जाते हैं. Like in some दिल टूटता है लेकिन किसी और चीज़ में टूटता है. It's not always like a person. It shouldn't be a person most of the time, I think. What is it? Give me an example. Okay, it was a person. लेकिन mostly it's just things. It's person की ही related things kind of. Yeah. It मतलब उसमें feelings ऐसे involved होती हैं. It could be a best friend. It could be your दोस्त. You know, just Yeah. Betrayal can come. betrayal. Have you ever had? No. Okay. I Watch out for that one. यार I've been like very blessed with amazing friends. मेरे बचपन के दोस्त अभी तक मेरे दोस्त हैं. And मेरे भी same. so Some of them I left behind. okay. But I also feel like that's a good quality because that kind of defines that you yourself are the sort of person who can sustain Stay, yeah. long relationships. And that's not even like, you know, romantic or anything, just like friendly relationships. ऊपर पता चलता है कि ये इंसान खुद सही. गद्दार नहीं है. मेरा ये like I'm literally into the long run. Like मुझसे वो छोटी छोटी वाली चीज़ें नहीं होती कि यार बस fun के लिए या if I start to like someone मैं पूरी बस घुस But जाती स्कूल में cool groups जो होते हैं yeah. उनके cool groups के अंदर enter होना और फिर लाइफ में निकलना. एक आया था ऐसा आई हाँ. थिंक आई वाज इन ग्रेड 6 to 8 जो मिडिल स्कूल वाला टाइम होता है
उसमें ये आया था कि मैं आई हैड अ फ्रेंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. Okay. दैट वाज अ बिट्रेयल वाली दोस्ती. Oh no. या और वो बिल्कुल नई नई दोस्त. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसकी वो गर्ल थी एंड शी वाज मेरे बेस्ट फ्रेंड से उसकी लाइक आई गॉट टू नो हर एंड देन हाँ. वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल. हाँ. उसके बाद ये हुआ कि शी वाज अ वेरी फेमस वाली बंदी, जो मीन गर्ल्स वाली बंदियाँ नहीं होती Yeah, वो. yeah, yeah. I got into their group and बस कुछ नहीं होता था, बस फेमस ग्रुप था वो स्कूल का. मैं भी बड़ी फेमस हो गई स्कूल में एंड एवरीवन काइंड ऑफ न्यू. This is how long ago? इन ग्रेड 6-7. तो मैं अब This was pre-YouTube career. प्री यूट्यूब या अब तो क्योंकि famous तो अब you're the famous नहीं, one. it was this. Now हाँ, you're the cool group and girls are like अब मैं इससे दोस्ती करके इसके ग्रुप में आ जाऊँ, इसके vlog में आ जाऊँ. I'll be cool. Does that happen to you? नहीं. नहीं. I think At least you don't think it happens to you. पता नहीं, आई डोंट थिंक इट हैपेंस टू मी अब. तो इट हैपेंड, मैं कूल ग्रुप में घुस गई बिल्कुल ना. एंड देन कन्फेशन पेजेस होते थे, तो इसके साथ उसका नाम लगा दिया, इसका उसका नाम लगा दिया एंड रूमर्स फैला दिए. और वो जो Gossip. गर्ल ड्रामा नहीं होता उसमें आई वाज लाइक then I came back to my old friends जो actually Did they take you back? Did you betray them and go there? Yeah. I didn't betray them, लेकिन वो वाली betrayal होती थी कि मैं breaks उनके साथ कर रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं कर रही. कैफेटेरिया में उधर नहीं बैठी. हाँ, तो फिर they were like कि मोमिना तुम हमारे साथ break में भी नहीं होती, और मैं उनको कटा देती थी. फिर later when I realized I did came back to them, और बस तब से उन्हीं के साथ हूँ मैं. Tables turn as well ना. I don't, that's the thing. फिर वो जब स्टार्टिंग हुई ना यूट्यूब की एंड नंबर्स थोड़े बढ़ने लगे, देन पीपल केम बैक. दे वर लाइक यूट्यूब कर रही हो तुम, यार अच्छी बात है. फिर उन्होंने अगर कभी कोई बिजनेस शुरू किया तो दे लाइक यार शाउट आउट तो दे दो. आई डोंट, आई एम लाइक पैसा दे देती हूँ. नहीं, आई गिव देम. मैं था लाइक पैसा. खैर कभी कभी इग्नोर भी कर देती I have this head boy used to be my head boy in school and he was also friends with my sister. Okay. So वो मेरे से थोड़ी बहुत ना, he used to like if I was late coming to class after school after break, तो वो prefects खड़े होते थे, कहते थे bend down करो, 10 push-ups निकालो. तो हम it's and miss ना चलता था ना. Then they'd like hit you and shit. Really? So, yeah, they'd hit you. ये all boys school तो मतलब. It was strange. बड़ी कहानी है. लेकिन ये वाली कहानी में ये हुआ कि this prefect he used to be nice. He used to be like, oh ये ज़ैनब का छोटा भाई है, इसको जाने देते हैं. तो मुझे like he used to let me go. Then I met him at a wedding and I was like, sir, I went back into being that little kid, even though now I'm like much older and the age difference is not even that much anymore, you know. So I was like, sir कैसे हैं? कहते हैं यार sir please ना sir क्या please, thank you. I'm like, just call me by my name. I was like his name whatever, I won't take his name right now. And then he said, by the way, big fan ये वो, and I have this business, so shout out. I was like, he did save me a few times, so I gave him a shout out, and then he asked for another shout out. I said, money. I was like, up now it's money, bro. This is how much the money is. Yeah. But you know, the one you can give. Yeah, true. Second, thoda you got to charge. I don't charge for shout outs, but then you don't charge for shout outs. It's okay. It's good. You're an open-hearted person. I got bills. True, I don't have bills. I like. How you have bills, right? I don't have bills. You don't have bills? Yeah. Yeah, amma de rahi hai. Amma de rahi hai. You probably bring in more. I didn't bring money home till I was 25, so I was just a boj. लेकिन 25 भी सही है. That's like most of the people. College graduate, bachelors वगैरह करके लोग आते हैं, फिर 1-2 साल gap years लेके 1-2 fail जो मेरे केस में थे. But what happened in this A-levels thing, man? There was some कि ब्रिटिश काउंसिल ने पता नहीं क्या कर दिया है ये. मुझे सारे कह रहे थे talk about it. मुझे भी कह रहे थे. Everyone was like, you talked about it though. तुमने तो दिया है. मैंने okay, so the thing what happened was कि they were like कि हम expected grades जो स्कूल ने दिए हैं, बल्कि ये तो बाद में सीन हुआ था. what happened was कि उन लोगों ने बोला था कि आपके जो स्कूल के रिजल्ट्स होंगे एंड टीचर्स ने जो predicted grades भेजे हैं उसको निकाल के हम आपको ग्रेड देंगे. and it had a system of like percentile system कह सकते हैं उसको, कि क्लास का साइज़ अगर 50 है तो उसमें तो 10 को A स्टार देंगे, 10 को A देंगे, फिर B C D E U देंगे.
तो it was like everyone was like कि जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो unfair system हो गई. When results came in, बहुत सारे बच्चों को unfair grades मिले. Like I know But you my were fine. friends. You were fine. I तो God नहीं, I'm like on top of the world. Lekin a lot of my friends got really like मतलब उनको अगर they were like A-star deserving people who Wow. got like B's या C's और grades भी बहुत downgrade हुए. तो I knew how much hard have they like worked on just the subjects और तो खैर फिर बाद में British Council did agree on just giving them the grades जो उनके स्कूल ने predict किए थे. Okay, cool. कुछ स्कूल्स ने मजाक ही कर दिया बच्चों के साथ. उन लोगों ने ऐसे शिटी ग्रेड्स प्रेडिक्ट किए थे कि बच्चों के अगर अपग्रेड भी हो रहे थे ना तो बाय 1 हो रहे थे और वो इतने अच्छे भी नहीं हो रहे थे. लाइक इवन विद मी आई थॉट डाउनग्रेड तो नहीं करने दिए ना. डाउनग्रेड नहीं करने दिए. सो बेसिकली किसी का अगर प्रेडिक्टेड ग्रेड बेहतर था तो ऊपर कर दिया वरना उधर ही थे. या ठीक है. ओके. तो बट लाइक माय स्कूल वाज लाइक उन्होंने तो मतलब इतना कोई मेरे साथ तो अच्छा नहीं किया. आई थॉट दैट आई ओके इट्स लाइक I'm very grateful for my grades, but still I wanted an A in social. So yeah, my sir was like, okay, you can do it. पूरे साल he was like, you can do it, you can do it, you can work for an A. I worked really hard for an A, to be honest. मैं social का पेपर अगर देने जाती तो I think मैं कर लेती, because like B से A हो जाता है. Even if it's hard हो जाता है. तो I thought कि अगर predicted grades and literally he has my grades in his hand, वो A ही दे देना क्या हो गया. अब तो ये पर्सनल मसला बन गया. तो ना I was really like pissed कि उन्होंने मुझे B दिया है. B दिया था. Did you talk to him? I wanted to talk to him, but then my friend But he's being did. fair. He also has to Yeah, be fair. like I think he did predicted an A for me, but counselors वगैरह जो है ना वो थोड़ी mix matching करते हैं. तो उधर जाके ना downgrade कर दिया होगा मुझे. खैर my So your grade remained. Yeah, जो भी मेरे स्कूल ने भेजा था ना. You got a B in that, right? Yeah. Yeah. So it remained a B. Yeah. And I'm fine It's with not it. bad. It's good. Yeah. लेकिन A ज़्यादा अच्छा होता. मैं तो E-levels में गया, फर्स्ट ईयर AS levels किए, फेल. और स्कूल ने लकास किया था, निकाल दिया बाहर क्योंकि मैं डिसिप्लिनरी भी इश्यूज चल रहे थे ना, तो निकाल दिया. फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक ये लोग तो बिल्कुल क्लास 5 वाली चीजें पढ़ रहे हैं. वही like even Shahzad, because I know what Shahzad studies there and I know what I'm studying here और it is so easy. हर चीज़ MCQ है भाई. क्या भाई यार ऐसे थोड़ी होता है. It's very easy. But they do like their terminologies were different क्योंकि अमेरिकन सिस्टम है तो हम सोका टोआ कहते थे उसको और वो लोग पता नहीं कुछ और. some people have curly brown hair through proper brushing. इधर भी वो बोलते हैं. I think I learned some people have curly brown hair. Oh, you did? Yeah. Things have changed. But like this is just random example. But like when I went, there were like many different little American versus British things. Because high school is American, right? But it was a lot more fun for sure because it was high school. It felt like I was in an American Hollywood movie. That was good about it. But you also, तो फिर आप तो चले गए थे. What about your comfort zone? With like was surrounding and people socializing. I was always very social. My comfort zone thing was like, if I was like, जब मैं अमेरिका गया था तो फिर वो comfort zone तो बिल्कुल ही टूट गई थी ना. सही. कि मुझे नहीं पता था. मुझे याद है मैं वहाँ पे लैंड किया हूँ. मुझे पता ही नहीं था करना क्या लैंड करके. मैं बस चला गया था और फिर मैं जब लैंड हुआ हूँ तो मैंने कहा क्या करना है. So you were alone. I was alone. Nobody was with me. And I was supposed to get to my college somehow. I didn't know how, but somehow. Uber भी नहीं होगी. Uber नहीं होती थी. And I'm like, I walk out of the airport and there's this blonde hot girl holding my name outside the airport. It's like Taimur Salahuddin. I was like, ये क्या हो रहा है? ये सच तो नहीं हो सकता यार. क्या हो रहा है? My sister for me. It was not. She was much older than me. I was just like, how is this happening? But it's just flattering as well. Like somebody cares, that I'm here. And I landed, and then it had occurred to me, oh, what am I supposed to do? I had all of my papers, but how am I supposed to get there? Yeah. So my sister's friend from Toronto, her name is Marla. She's an excellent singer. And a star over there actually as well. So she was waiting at the airport because my sister knew her from Toronto and she was in Vancouver, so she came to pick me up. And then I stayed at their house for 2 days. Father had a Porsche.
Yeah, I got to sit in a Porsche for the first time. Yum. That was fun. That was fun. But yeah, I had no idea, and that's why I got evicted from the dorm room. Oh, for love. Yeah, I was a problematic child. Proper like issues with authority. Like you have issues with Same. authority. I don't think you padde nahi karti. Lekin main to हाँ, I पढ़े नहीं broke the. I was in a class in HSN where we broke all the lockers. We broke the blackboard. Oh god. Teachers would be afraid of entering our class because we'd be ready with spitballs with their straw, and we just so अच्छा, the मैं बहुत teacher would तमीज़ turn वाली around हूँ. teacher would turn around to write with chalk, right? The minute he would turn around, there would be 3 spitballs on his face, you know, like so. अच्छा, मैं बड़ी तमीज़ वाली हूँ, मुझसे ना ये नहीं होता. लाइक आई एम लाइक अथॉरिटी उधर आती है जब बस मेरी बात सुने आप, बस मेरी बात. वो वाली नहीं आती कि मतलब ये डिस्ट्रक्टिव नहीं हूं ना. डिस्ट्रक्टिव नहीं हूँ मैं अगर डिस्ट्रक्टिव हूँ भी ना तो वो खुद के लिए हूँ. इट्स नेवर ऑन समवन एल्स, इट्स Yeah. ऑलवेज ऑन मी. कि Yeah. इफ आई एम लाइक एंग्री तो मैं खुद पे निकालूंगी. Yeah. अगर मुझे गुस्सा, ओके, एंग्री एंड गुस्सा इज द सेम थिंग. Yeah, same. Yeah. लेकिन वो वाला जो गुस्सा नहीं होता, अगर हल्का सा भी गुस्सा है Hmm. तो मैं अपनी चीज़ों पे निकाल दूँ. आई एम दैट टाइप जो दूसरों पे नहीं निकाल पाती. कि गुस्सा है तो फोन फेंक दिया टाइप, है ना? या ये वाला सीन ना. हाँ, ये वाला सीन है. कि ये क्या फोन गया. इट हैपेंड वेरी रिसेंटली. अच्छा, अभी फ्लैशबैक आया, मैं यूं करके फेंका मैंने. तो चीजों पे ही निकल रहा है ना. इट्स नॉट लाइक अफेक्टिंग योर सेल्फ या इमेज. नहीं, वो वाला नहीं हो रहा कि मैं अपने आप को Oh, थप्पड़ I'm मार such रही a हूँ. loser. नहीं, ये तो नहीं ये होता. सेल्फ एस्टीम वाले इश्यूज आते हैं, लेकिन सबको आ रहे होते हैं वो थोड़े हाँ, वो थोड़े. तो it's part of life, Yeah. I suppose, right? लेकिन वो चीज़ों पे ज़रूर निकलता है. वो मेरी ही चीज़ों पे निकल रहा होता है. I guess हम भी चीज़ों पे ही निकाल रहे थे. लॉकर्स वगैरह ही तोड़े थे, किसी और को हार्म नहीं किया था. But yeah, so I had that still in me when I went to college. अच्छा, लेकिन मेरे स्कूल में भी दिस वाज वेरी नॉर्मल. Yeah. तोड़ देते थे फंके. एक दिन मैं क्लास में घुसी, किसी रैंडम क्लास में थी, ऊपर ऐसे ही देखा मैंने, जो फंकों की वो लाइक वो थी, वो ऊपर हुए मैं. That's a very difficult thing to do. How did they? कोई को पहलवान आया, उसने And it was my cousin's class, तो उसने मुझे दिखाई, देखो हम लोग ने क्या किया. क्या हो रहा है यहाँ. accomplishment. Slow claps. और फिर आई रिमेंबर देयर वाज दिस सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन था जो बहुत एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिव था, और वो प्रिंसिपल के ऑफिस के साइड में था एकदम, उनकी क्लास. जान के रखी होगी उधर उन्होंने. और आई थिंक उन्होंने चेंज की थी, पहले वो कहीं और थी, फिर प्रिंसिपल के ऑफिस के साइड पे कर दी थी ताकि डर जाए. लेकिन नहीं, ऑल द टेबल्स वर ब्रोकन इन दैट क्लास. नीचे ज़मीन पे पड़ी होती थी. क्लास में टीचर को घुसने नहीं देते थे. आई स्टिल रिमेंबर, आई ऑल्सो डिड दैट वंस, के दरवाजे ही हमने लॉक कर दिया, आप घुस के दिखाओ. और एक बार हमने दरवाज़ा तोड़ दिया. आई थिंक वाज द सेम डे वी वर प्लेइंग विद, दोस्तों को अंदर नहीं आने दे रहे थे हम, या इट वाज समथिंग लाइक दैट. आई वाज इन ग्रेड 8 और दरवाज़ा तोड़ दिया हमने. Wow. एंड देन जो हमारी टीचर थी, क्लास टीचर, शी केम इन, और बस बहुत गुस्से में ना, बस लड़कियां थी हम लोग, एंड उन्होंने बोर्ड के पास हमें लाइन से खड़ा किया. मुझे इतनी हंसी आ रही थी, यू नो, व्हेन टीचर इज लाइक स्क्रीमिंग एट यू, यू नीड टू लाफ. और मैंने इतनी मुश्किलों से हंसी रोकी हुई थी. माय फ्रेंड एट माय साइड स्टार्टेड कफिंग, और मुझे और हंसी आ रही है कि कहाँ हंस क्यों रही है, और मैं हंसी जा रही हूँ ना दिल में, मतलब वो बस निकलने वाली है. एंड आई वाज लाइक, कहने को तो वॉशरूम में हंस के ना बोल रही हूँ मैं. And then I like ran to the washroom and laughed इतना जोर से. It was like, and उसके बाद से I was like, भाई ये तो अजीब ट्रबल में हो गई हूँ मैं. हंसी आ रही है मुझे. Yeah. खैर फिर grade 11 में भी I used to get a lot of panic attacks just because of my principal. Serious panic attacks or just like you're using the word loose, the term नहीं, loosely? they were like serious. अच्छा, anxiety issues हैं. फुल एंजाइटी वाले पैनिक अटैक्स आते थे. Crazy. ये होता था कि ओके, आई एम दैट टाइप जिसने कभी बंक नहीं किया है. Oh. सही है, मैं बहुत शरीफ सी बहुत बच्ची, शरीफ. सही है. और फिर ना फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिया कि ये मैं वॉशरूम जा रही हूँ या टीचर के पास जा रही हूँ. वो आ रही हैं, राउंड ले रही हैं, एंड शी कॉट मी कि व्हाई आर यू गोइंग आउट, एंड क्या बंक कर रही हो ना तुम, चलो मेरे ऑफिस में. एंड शी टुक मी टू हर ऑफिस, और ना सुनाना शुरू. एंड मुझे कभी ना किसी ने ऊंची आवाज़ में भी सुना ही नहीं है. बहुत पैम्पर्ड बच्ची हूँ मैं. तो अगर कोई मुझे सुना रहा है ना, मेरे तो आंसू शुरू.
सही है। अब फिर ना उसके बाद आई स्टार्टेड टू, मतलब वो फुल ऑन जो पैनिक अटैक आता है ना, सांस ही नहीं आ रही भाई, सांस दे दो कहीं से। Oh, no. वो वाला। उसके बाद ना ओके शी रियलाइज के वो शिट लाइक ये बेचारी मरने वाली है, इसको क्या करें हम। तो ना शी लाइक पिक्स अप लाइक वहाँ पे साइड पे जूस पड़ा था, उन्होंने जूस उठाया, स्ट्रॉ निकाल के डाला और पियो। द एड में नहीं होता वो यूँ दिखा रही है जैसे ये तो अच्छा कमर्शियल बनता है। it was so funny कि she like countered it with a juice का डब्बा कि ये पियो, and I couldn't drink, सांस ही नहीं आ रही थी, पानी क्या पीऊँगा, जूस क्या पीऊँ। खैर फिर she calmed me down eventually, और फिर अगले दिन ही I brought my phone to school. अच्छा हमारे फ़ोन्स अलाउड होते थे, तभी मैं स्कूल में आराम से ब्लॉग कर रही होती थी, फ़ोन्स वर अलाउड। लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना वो स्ट्रिक्ट होते गए कि नहीं फ़ोन्स अब अलाउड नहीं है, तो दे टुक माई फ़ोन। और उस दिन आई थिंक मुझे फ़ोन में ज़रूरत से ही लाई थी, मैं ऐसे ही नहीं लाई थी कि वो फ़न स्नैपचैट्स बनाऊँगी, इसलिए नहीं है कि वो ज़रूरत ही थी। आई थिंक आई हैड टू गो टू माई लाइक कज़न्स प्लेस, इसलिए कॉन्टैक्ट करना था या कुछ, छुट्टी टाइम। हाँ। तो मैंने बैग में ना ऐसे ही रखा हुआ था। अब वो जो व्हाट्स इट कॉल्ड, जो वो बीप बजती है, हाँ The vibration. वो बजी एंड टीचर वाज लाइक कि निकालो। उन्होंने ले लिया मेरा फ़ोन। अब आई डिडंट माइंड, आई वाज लाइक छुट्टी में दे देंगे, क्या मतलब, मैं वैसे भी किसी काम से लाई हूँ, कोई मज़े के लिए नहीं लाई। फिर मैं गई छुट्टी टाइम में लेने अपना फ़ोन, एंड शी वाज लाइक ब्रिंग योर पेरेंट्स, एंड मैं no. कॉन्फिस्केट कर रही हूँ। अब मेरी इधर फट गई। मैंने कहा My phone. My How phone, मैं जाऊंगी किस तरह? I had like extreme, मतलब मैंने कहा ना, अब आई वाज लाइक कि अच्छा सही है, आई जस्ट नीड, मुझे आप ऐसा करें, मुझे बस कॉल करनी है ना, लेकिन आई हैव माय चाचीज नंबर इन माय फ़ोन, तो आई डोंट रिमेंबर द नंबर, आई जस्ट, मैं स्कूल के ही फ़ोन से नीचे कॉल कर लेती हूँ, आप मुझे बस ये करने दें। नो सॉरी, फ़ोन तो अब मेरे पास ही है। एंड आई वाज लाइक मैं कैसे जाऊँ घर। ओके अब 2 बजे छुट्टी हुई है, 3 बज गए, 4 बज गए, मैं बैठी हुई हूँ। I was like, please, अब मुझे, I just need that freaking number in that phone, like Yeah, कुछ then I can ज़्यादा dial नहीं। it from another phone. Yeah. नीचे रिसेप्शन वाले फ़ोन से मैं बस कॉल करूँ। She was like, no, you need to call, you need to bring your mother। मैं कैसे लाऊँ मैं अपनी माँ को जब तुम अपने पास फ़ोन रखी हुई हो। अजीब। खैर उसके बाद आई थिंक अम्मा wasn't in Karachi, आई थिंक वो इस्लामाबाद गई हुई थी। Okay. तो the only contact that I can actually do was to call my चाची, and उनका नंबर मेरे फ़ोन में था। अब मैं उनको इतनी बार मैं अपनी सिचुएशन समझा रही हूँ, अब उनकी ना टोन बिल्कुल चेंज होती रही, और शी वाज लाइक, ओह यू आर सच अ मम्मीज़ बेबी, और ना अजीब तरीके से बात करी थी, लाइक नॉट हाउ यू शुड टॉक टू अ स्टूडेंट एट ऑल। Yeah. एंड मैं ट्रिगर हो गई, भाई क्या क्या बोल रही हैं ये, मुझे ना बस सुनाई जा रही हैं। मैं उधर भी शुरू, सांस नहीं आ रही Panic भाई, attack हो सांस गया। ही नहीं आ रही ये मुझे। तो मुझे लगता है जान के भी किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त ना इट फेल्ट सो लाइक कि बस अभी मैं हार्ट अटैक आ रहा है मुझे, इट्स द लास्ट डे ऑन दिस अर्थ फॉर मी, अल्लाह हाफिज, पीस आउट, अभी आएगा दिखेगा मुझे फरिश्ता कहीं निकालने मेरी रूह। खैर यार, अच्छा साइड पे उनकी वो, आई डोंट नो हु शी वाज, कोऑर्डिनेटर थी यार, इसको देखो यार, जब देखो रोने लग जाती है। They're desensitized to your रोना now. और रोने लगी ना मैं फिर। सही है। अब शी टुक मी, जो उनकी कोऑर्डिनेटर थी, वो मुझे वॉशरूम लेके गई, शी काम्ड मी डाउन एंड शी वाज लाइक, मैं तुम्हारा फ़ोन दिलवाती हूँ, बट यू नीड टू बी वेरी क्वाइट अबाउट दिस। वो छुपके से मेरा फ़ोन लेके आई, द प्रिंसिपल स्टिल डजंट नो दैट शी टुक माई फ़ोन फ्रॉम मी। एंड You graduated now. You're not going to get in trouble if I put नहीं this in the नहीं podcast. नहीं Okay, good. आराम से डाले। आई डोंट लाइक माई स्कूल एट ऑल। Really? यप, You don't? ऑल्दो मैं 14 साल उधर पढ़े। और सारे दोस्त भी वहाँ के? हाँ, I love my friends. It's हाँ. just the management that I don't like. Yeah. मेरी आधी जो ये मेंटल इश्यूज हुए हैं ना, उन्हीं के वजह से हुए हैं। I don't know, man. It sounds like a lot pleasanter than than the school that I went through. वहाँ पे तो मारते थे ना, वहाँ पे तो caning होती थी public. So there'd be like this one, it was called a general assembly, जिसमें वो, you must have seen this in the कौमी तराना, वो पगड़ी पहन के नहीं बच्चे खड़े होते हैं, सही, हाँ हाँ, ब्लेजर्स पहन के। तो वो एचएसएन की शॉट एक कौमी तराने में भी आती थी। तो सही। पगड़ी पहन के, ब्लेजर्स पहन के 5000 बंदे जो है ना एक एम्फी थिएटर में खड़े हुए हैं, और it's in college, attention, and then the whole school would go stomp their foot, Oh God. and you'd hear the, you know, तो वो एक powerful
असेंबली होती थी, उस असेंबली के अंदर होता था फलाने बच्चे ने गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया, सो driving cars was banned in HSN, and they would catch kids driving cars because you're under 16, you know, it's illegal, right? So a few kids got caught, और वो फिर कोई 6-7 नाम थे और वो लिस्ट पे लिखी हुई आती थी, ब्लैक लिस्ट. और फिर वो जनरल असेंबली में उनको बुलाया जाता था, they'd bend over, they'd put a seat there, they'd bend over in front of these 5,000 kids. The Shamim Khan, who was our principal then, he would take a cane out and he would take a full swing and on the back over there, you know, and it would echo, and it was scary, man. We would see this, I was like, मैं कभी ना पकड़ा जाऊँ. illegal होना चाहिए. अब I think illegal है वो, उस जमाने में हमने देख लिया वो सारा I don't understand how this, मतलब I never got caned. I got a pink card, which is like one step towards caning. एक और pink card and there's 5 canes for you. And they would do it like in front of people ताकि बच्चे डरते. वही तो, that's like very embarrassing. It's embarrassing. But like it's not as embarrassing if there were girls there. That would be really embarrassing. हाँ, but only the boys got to see it. Yeah. There's this one, a kid, Haider Khan Niazi was his name. उसको हम छोटी असेंबली में प्रेप स्कूल के अंदर ना उसको केनिंग हो रही थी. तो उसको जब पहली उनने केन मारी ना, तो आवाज आई कि something's weird. उसने पीछे रजिस्टर डाला था अपनी पैंट्स के अंदर. भाई ये तो I think तो बचने के लिए ना लाइफ हैक. तो फिर टीचर ने फिर टीचर रुका है केन से, उसने फिर हाथ लगाया वहां पे ना और उसके बाद उसने कहा ये क्या किताब निकाली है उसने. फिर उसने दूसरी वाली उसको छड़ी मारी, उस बंदे ने हाथ में पकड़ी है. बड़ा गैंगस्टर होता था. उसने हाथ में पकड़ी, उसने and he ran towards the wall of the school. He jumped over the wall, he ran out of the school. I never saw him again. Really? I don't think you can ever do that in front of, you know, like I think 1,000 लोगों का मजमा था जिसके सामने उसकी केनिंग हो रही थी, and he told the teacher मैं जा रहा हूँ. Left. पकड़ के भिगाओ. Yeah, so that was some scary stuff. I wish I'll make a movie out of it someday, maybe. You should. It's fun times. Movies तो I've stopped watching movies. And social media. Yeah. You're reading books. I am reading books. How did that happen? It happened very randomly. वही मैं YouTube पे ही थी, and then I saw a reading vlog of a YouTuber, random YouTuber. So I was like, reading vlog क्या होता है ये? Yeah. And then I started like, चलो reading should be fun. फिर एक PR आया था मुझे books का. So they were just there. I was like, okay, let's just pick up one book and read. फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो कभी नीचे रखी नहीं until I finished it. This book was places I've cried, public places I've cried before, cried in before by Holly Bourne. Okay, I gotta check it out. नहीं आपके टाइप की नहीं होगी. क्यों? I think it's मैं सब पढ़ता हूँ. Really? नहीं, मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ खाली. But it's like very teenager romance and पता नहीं क्या किस इसको genre में डालूँ मैं. It's confusing. It has a lot of things. I love teenager romance. It's coming of age. I mean, I don't know. It's like heartbreak. I love heartbreak. बस पढ़ें आप. It's like a girl's point of view of a heartbreak. Oh, that's even better. Yeah. There's one of my favorite writers, Nick Hornby, has written a bunch of books that are like very easy pot reads, like, you know, like not like dense. I remember in school they used to, I think the reason why I didn't get into books was because back in O-levels they were making us read these books जो उस लेवल की थी ना कि एमिली ब्रॉन्टे की कोई वदरिंग हाइट्स. समझ नहीं आ रही क्या बात हो रही है, क्या बात कर रहे हो, मिसैंथ्रोप क्या होता है, मुझे नहीं पता यार. क्या अब मुझे जाके पता चली वो चीजें. एंड मे बी नाउ इफ आई रीड इट आई माइट एंजॉय. आई इवन मुझे यही था कि मैं स्टार्ट करूँ ना तो कोई इजी बुक से करूँ, बिकॉज वंस यू गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग यू कैन ऑलवेज गो अप. एक बार आप ऊपर से आ रहे हो तो वो इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो तो फायदा क्या. तो आई स्टार्टेड नाउ रीडिंग हरुकी मुराकामी. He is like, Murakami, what did he write? Because I've heard his name so many times by so many people. He wrote a lot of books. जो मैंने अभी पढ़ी थी वो Kafka on the Shore थी. That's the one that people talk about. Yeah. Yeah, it's the most confusing book I've ever read, but so satisfying in the same way. Like the way जो magic realism और realism वाली part आती है, and it's just a fantasy in your own brain. आपने जो story बनाई हुई होती है ना, like when you're reading fiction, it's your own like characters or you develop a voice in your head. एक खुद एक voice आ जाती है. It's so different. Never ever मैंने सोचा था कि ये stories भी ना बनती होंगी दुनिया में. Yeah. It's amazing.
it's a little weird too, matlab, I mean, it's magical realism, so it's got to be, right? it's very weird. I've only read Gabriel Garcia Marquez, who also is अच्छा, सही. talked about as the हाँ. magical realism king as well. So But उसमें ना थोड़ा जापानीज का टच आता है, लाइक जापानीज हिस्ट्री का टच आता है. एंड although I'm not into history that much, लेकिन इसको पढ़ के ना I'm kind of getting interested in history as well, because there's always a time कि अच्छा वो when he talks about war, it's so interesting कि यार मतलब now war is such a thing कि बिल्कुल भी ना लोग कहते हैं कि war नहीं होनी चाहिए, like we know we've learned from the past. And उस time पे how much like hate was there in between Japan या अमेरिका वाला अमेरिका, yeah, ये उस जमाने वर्ल्ड वॉर 2 की है ये. yeah. Oh wow. तो उस पॉइंट पे ही ऑल्सो काफ्का ऑन द शोर के अंदर एक लाइब्रेरी है, दैट्स लाइक जो वैसी लाइब्रेरी मुझे चाहिए, लाइक जैसे उसने डिस्क्राइब किया ना वैसी एक लाइब्रेरी मुझे बस चाहिए. लाइक इट्स वन ऑफ माई मिशंस टू फाइंड अ लाइब्रेरी लाइक दैट, बिकॉज इट्स अ बहुत अजीब तरीके से वो डिस्क्राइब करता है जो मैं अभी वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा अजीब होता है. Wow. You should read. I'm going to read that. But don't read Kafka on the Shore. I think जो अगर मुराकामी को पहले पढ़ना है ना, probably read, I forgot the name. It was something Norwegian Wood. Oh, that is a Beatles song as well. His music interest, सही उसके books में इतना music, like heavily influenced by music, American wow. music as well. So in Kafka on the Shore, he talks about Prince, I love Elvis, Prince. Oh. and it's so nice, like. Oh, that's great. Yeah, because then I can relate to the writer Exactly. faster as well. Yeah. Right? Because मैं तो और Prince उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जहाँ पे you relate to him, but like music आप relate कर रहे हो, but again you can magic realism में आप relate नहीं कर सकते. And I like to like relate to stuff, and I think इस वाली book में मैंने सबसे ज़्यादा highlighting की है. Although I couldn't relate much, लेकिन I could relate to the thoughts that character was having. I think you should read it. Like I think this is Norwegian. the beautiful thing about books is, which is not there in even film to a big degree, is that you're almost inside someone's head. Exactly. Right? You're reading it and you're like, ये एक इंसान की आवाज़ है जो अब मेरे दिमाग में बोल रही है, और वो खाली कोई letters हैं जिनकी वजह से वो आवाज़ बनी है. When you're listening to an audiobook, it's someone's rendition of it. So they'll do like, oh, so I was walking. They'll do a voice for you. But in your own head, you make your own voice. Abhi, I'm not into audiobooks yet. Like, I was thinking of getting a Audible की subscription because I love it. Because एक तो fast हो जाता है थोड़ा, so ये जल्दी आप खत्म कर लेते हो. And I'm that Plus, type you can be doing other things. Your eyes are free. वही तो eyes are free. लेकिन मैं जिस तरीके से देखती हूँ ना वो फिर I should get into audiobooks, I think. I don't know. I mean, so I think people who can read and do read, it's a great habit. My wife reads a lot. And I think it's a great habit. I think मेरी एक shortcoming है. तो मैंने इसलिए उसको convert कर लिया. Like, you know, I'll be editing or like rotoscoping something. तो उसमें मेरे कान free हैं. और मैं अब rotoscope कर रहा हूँ. And it's kind of like a mundane, tedious, boring सी चीज़. But करनी है. Monotonous सी तो. साइड से मुझे अगर कोई लेक्चर आ जाता है and I'll only listen to audiobooks mostly in non-fiction. So when it comes to fiction, then I want my own brain to do some of the lifting. अब मैंने ना non-fiction नहीं पढ़ी है. I've not went into like उधर नहीं गई हूँ मैं अभी. I think fiction में अभी मैं ज़्यादा interest develop करूँ because I'm very like new to reading. तो it's been like मैंने जुलाई में start की थी. 18 books in 1 month. That was huge. That was huge. That's the month you didn't post anything on YouTube. Is that the month? है ना? नहीं, I did. मैंने Harry Potter की books, I posted Did you a read all of reading. them? नहीं, I am on I the stopped third at Order of Phoenix. It's the mota wala. wala. Because Prisoner of Azkaban, similar sizes, they kept increasing. But then when I saw that, it was a huge. मतलब मैंने उसका size मैंने कहा यार, mountain चढ़ना पड़ेगा. It's a big one. Yeah, it's a big one. So that's where I left. लेकिन even like Murakami की it was 600 pages. Oh wow. तो I read it. It took a while for me. 1 महीना तो लग ही गया. 1 महीना मुराकामी. लेकिन it was a hard one. It was like मैं 2 बार पढ़ती थी pages को. You read a book at a time or do you split it between 2 books? No, I read a book at a time. One book at a time. I sometimes split it. मैं उस level पे नहीं आई अभी. I think मुराकामी अगर मैं पढ़ रहा हूँ for example, or there's this guy Dostoevsky. So he's got this book called The Brothers Karamazov. I had to put it was so dense.
it's like having a steak. Each हाँ chapter is like having a proper meal. सही Now you're full. I can't even take more of that book I anymore, think that's a good thing. I forgot that क्या नाम था उस यूट्यूबर का पता नहीं, लेकिन एक वीडियो थी बुक स्टोर्स के ऊपर. इट्स Okay. टाइटल्ड बुक स्टोर्स एंड उसमें a person researched yeah interviewed people who can read really fast या who have the habits of reading, and उसने बहुत सारी दुनिया की libraries explore की, and then he got to a conclusion कि उसके अंदर ये वाली बात थी सबसे पहले कि if you're like reading one book and you're you know kind of bored with it, एक बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया, एक chapter आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, you should take a break and start reading something new, because एक mind वो हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है. तो आई एक लाइट वाली साइड पे रखो हाँ, और एक गहरी वाली इस तरफ रखो. मैंने अभी एक बुक ऑर्डर करनी थी. इट्स कॉल्ड अ लिटिल लाइफ बाय हानिया यानिगहारा. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट नेम, लेकिन इट्स अ वेरी ट्रिगरिंग बुक और मुझे वो पढ़नी थी बिकॉज मैंने उसके ऊपर बहुत सारे रीडिंग व्लॉग्स देख लिए हैं. दैट्स द थिंग व्हेन समवन लाइक reviews a book and it's so like But that gives away all the spoilers. नहीं, most of them don't. Okay, they don't. मैंने जो वाली देखी है ना वो spoilers के बगैर वो देखी है. spoilers के बगैर. तो बस अब ना मैंने इतनी इन्वेस्ट हो गई हूँ मैं. they do tell the story but spoilers नहीं देते. Okay. तो अब जो वो बीच में मुझे आधी स्टोरी पता है लेकिन वो जो एक्चुअल एंड है ना वो मुझे नहीं पता. Synopsis आ गया. Okay. तो I need to read that book and it's like 800 pages long and पाकिस्तान में मैंने हर जगह देख ली है ऑनलाइन. So yeah, online I've looked everywhere for that book. LibertyBooks.com. नहीं, out of stock. I thought of requesting it, तो ना फिर readings पे मुझे मिल गई. Oh, तो nice. I ordered it readings पे. तो अगले दिन मैंने जब ट्रैक करने के लिए खोला, I get very excited when I order something, ट्रैक करूँगी. ट्रैक करने पे मैं बैठी तो ऑर्डर रिसीव्ड आ रहे. Okay, I paid it with the card ना, तो COD भी नहीं थी. मैंने कहा मेरे घर पे तो नहीं आई है ये गई कहाँ. एंड देन आई कॉल देम कि आई ऑर्डर्ड दिस बुक और ये अभी तक नहीं आई है लेकिन ऑर्डर रिसीव्ड लिखा आ रहा है ट्रैक करने पे. तो दे वर लाइक, ओ ये आउट ऑफ स्टॉक है, आई एम सॉरी, देयर मस्ट हैव बीन अ मिस्टेक. तो आई गॉट सैड अगेन कि यार अब तो Did they refund the money? आई हैवंट चेक्ड यट. बस देखना है उनको. Readings. I love readings. Readings is great. Variety कह रहा हूँ. Liberty Books is also great for Yeah. ordering online. And then there's Variety Books in Lahore, but I guess you'll never go to Lahore. Like Lahore? I like Lahore. You don't like Islamabad too quiet? Islamabad is too quiet. Lahore is like party mahal. Do you have buddies or party mahal? Huh? I have family in Lahore. तो although I've been to Lahore like once in my life, और वो भी सर्दियों में गई थी तो मैं fully ना वो enjoy नहीं मुझे कर तो पाई. सर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं लाहौर की यार. I get to wear my jackets, man. अच्छा, मुझे इतनी आदत है कराची की सर्दियों की जो होती ही नहीं है. हाँ. तो मैं कहीं अगर सर्दी में जाती हूँ ना तो मेरा हो जाता है कि यार सर्दी लग रही है. बाहर नहीं जाना. I hate to layer हीटर के clothes. सामने बैठे रहो. बस पूरा वक्त आई यूज्ड टू बी बस हीटर के सामने. कोई हीटर के सामने नहीं है, मोमिना मिलेगी. This is exactly what happens to my wife. Iraj is like sitting in front of the heater all the time and she's like freezes. हम लोग का है ही नहीं. वी आर लाइक अडेप्टेड टू कराची वेदर इतना ज़्यादा कि कहीं और अगर चले जाएं तो बस उधर ही ख़त्म हो जाती है मेरी कि भाई कराची चलो. Oh man, I love Lahore. I'm actually slowly shifting back. Really? Yeah, I'm trying. Let's see, because मेरी यहाँ पे भी जिंदगी बनी हुई है. Like this place and like True. the crew and everybody kind of lives here. They also have their life set up here, Yeah. but my parents are Same. there. I want to live with my Yeah. parents now. हाँ, I've जो बात है. accomplished a certain bit. अब family. इधर आके अब थोड़ा family कर. वही ना, वो that's the thing, priorities always kind of Shift. bend and shift. Yeah. And like my parents are also like, they wanted me to hustle हाँ. for a certain bit, Yeah. and I'm still gonna hustle. That's not never gonna stop. Now it's become an True. instinct. Like वो True. अब इतना ज़्यादा hustle कर लिया है कि वो सुबह उठते आदत साथ हो पहली जाती चीज़ है. कौन सी चीज़ के किस वीडियो पे काम कर रहे हैं, Yeah. क्या कर रहे हैं, so it's a habit now, but instinct is there, so now I can go back and readjust, and I'm looking forward to it. Good luck. मैं that's the thing, वो hustle वाली बात. एक point आया था with me that even quarantine में ही आया था कि मैं बस consistent हो जाती हूँ, घर पे ही बैठी हूँ, बनाने लग जाती हूँ. तो I took a break for some time after March, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा रमज़ान वाला टाइम आया, मैं चलो बनाते हैं. तो उसमें I posted every day for 7 days. हर रोज़ like एक वीडियो आती थी एंड सुबह उठती थी एंड क्या बनाऊँ,
कुछ भी रैंडम, कभी टिकटॉक्स देख लिए, कभी मेकअप कर I've लिए. seen the reaction to TikTok. That happened in Ramzan. आई थिंक इट वाज आफ्टर रमज़ान या रमज़ान उसी टाइम के बीच में Yeah. था, उसी टाइम फ्रेम के बीच में. तो खैर आई वाज लाइक वो वाला कंसिस्टेंट होना है, लेकिन आई रियलाइज्ड कि मुझे यूट्यूब नहीं पसंद. क्या नहीं पसंद उसके बारे में? आई डोंट लाइक मेकिंग वीडियोस नाउ, लाइक आई Yeah. डोंट एंजॉय देम जितना मैं एंजॉय करना चाहती हूँ. Mm-hmm. मतलब आई डोंट नो, मेरा पता नहीं, द यूट्यूब वीडियोस आई वॉच are like totally different what from I make. Something Uh-huh. like what I consume, मैं वो नहीं What do you देती हूँ. consume? I consume a lot of Reading vlogs? reading vlogs. तो मैं अभी जो मेरी YouTube हिस्ट्री होगी ना, सबसे पहले तो गुमान होगा उसके अंदर. आए दिल के करीब. गुमान के बाद अब आएंगे रीडिंग व्लॉग्स, बुक रिकमेंडेशंस या जस्ट books all over. अभी मैं उस सीन में चली हूँ, लेकिन at that time I was just consuming a lot of random documentaries. I'm really into serial killer documentaries. Yeah, I It's got into just them too. वो ये psychology Did वाला you see the part Stephen जाते हैं Avery one? Which one? Did you see the Jinx? नहीं Oh, you gotta see the Jinx. नहीं देखी मैंने. Oof. Jinx. I didn't. Jinx मैंने is सुना है about Jinx के बारे में. Jinx is about. So there are two documentaries. There's one, Making a Murder. Did you see that one? Yeah. So yeah. Making a Murder की opposite है the Jinx. Oh. So Making a Murder is a poor guy who's a southern redneck Sorry. guy, and he doesn't have the right lawyer, and he might be guilty, might not be guilty, and they put him in jail because the legal system is so flawed in America, right? The Jinx is he's a rich guy with a good lawyer, like but he's getting definitely the away. murderer. हाँ, he's getting away with the He's murder. getting away with the murder. तो okay, I started watching How to Get Away with Murder too. Ooh. तो उसमें That's a series, right? yeah, that's a series. Shonda Rhimes की. तो I love Shonda Rhimes. मैं Grey's Anatomy, सारी Shonda Rhimes full true fan. She's an amazing writer. Yeah. I've seen some of her interviews. Uff, Allah, amazing. Yeah. तो ना I started very recently as well. तो मैंने देखना शुरू किया. I was like, यार legal system is very like कि किसी को भी अगर उसने crime नहीं किया है ना, you can make him look the मतलब murderer आराम से. Just एक alibi बना लो अपना और डाल दो उसको. You can. That's the. I think there's this film called Life and Death of David Gale, which is also about this, which is against capital punishment. तो उसमें उनने ये दिखाया कि जिस तरह अभी कैपिटल पनिशमेंट की हमारी बातें हो रही थी कि गैंग रेप के अंदर बंदे को टांग देना चाहिए, पब्लिकली टांगो, ये करो वो करो. बट उसमें जो 1% चांस है कि आप गलत बंदे को पकड़ के टांग देंगे ना, उसकी वजह से मुझे मेरा कैपिटल पनिशमेंट का वो कीड़ा ऑफ हो जाता है कि यार आई डोंट नो, even if it is 1% chance कि उसका भाई था, he looked the same, and the girl identifies him in the lineup, you know, and David Gale does exactly that. So this guy, and it's based on a true story, I believe, कि उसमें वो एक बंदा अपने आप को फ्रेम करता है through the legal system, and he gives his life. He gets hung, and after he's hung, he releases the videotape and he shows that he actually didn't do it. So two people give their life. This is the person who gets murdered. और जो innocent था. और जो innocent था, just to prove that the capital punishment thing is not the right way to go. And I think especially in Pakistan, I don't trust our. I mean, we to have basic issues, man. Basic issues. You know, like ये तो पैसे लगा के लोग बाहर निकल जाते हैं. Is that kid? And now I don't know if this kid who stabbed the girl. Remember the guy who stabbed the girl 12 times? सही है. Supposedly there's a video. I haven't seen the video, but I've heard people tell me कि वो CCTV की footage है कि 12 दफा उसने stab किया, बाहर निकला और उसने कहा अपना नाम लिया और चला गया. और and he's not in jail. He got away. That's the thing. I hate the elites. मुझे पर्सनल इश्यूज हैं उनसे. लाइक बाप वकील है, बाप पुलिस में लगा हुआ है, तो बच इतने चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एक प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन वी वोंट यूज मनी एज लाइक पावर नहीं, हम अब्यूज नहीं कर रहे ना. अब्यूज जो आते हैं ना वो आई थिंक इट्स लाइक plus these stories, the gang rape story was so harrowing. I was भाई मुझसे तो that's the thing, that's why I want to just leave my phone alone कि बस मैं न्यूज़ ही ना देखूं. बिल्कुल सही है. Because it took me 3 days to just process the fact कि मुल्क में हो क्या रहा है, मतलब and then again एक लोगों का प्रेशर आता है, आप बात क्यों नहीं करी इस बारे में, aren't you a female yourself, why aren't you talking about this, and I'm like मुझे जो असर हुआ है वो मुझे, मैं जो ट्रिगर हुई हूँ, थोड़ा सा तो टाइम दे दो यार, बात करूंगी, मैं करूंगी, जरूर करूंगी, बट
I need to also मैं आके गुस्से में ये बोल दूँ वो बोल दूँ वो that's just like also That's very mature. कौन सुनेगा मुझे मतलब Mature. उस बंदी की बात ही सुन ले वो मेरे लिए बहुत है मैं अगर लगा दूँ एक स्टोरी क्या चेंज आ जाएगा इससे Yeah. मैं अगर पिटिशन भी साइन कर लूँ चलो आ जाते हैं पिटिशन से लेकिन मोस्टली पिटिशंस भी ऐसी बस साइन करे हुए होते हैं कुछ कोई हाँ असर हमें नहीं नजर आता कोई like you know असर like नहीं out of solidarity I also signed these petitions. yeah but I like showed up outside press club for the exactly little riot thing yeah that they were having yeah but I don't see a change. we don't I mean so I try ke with this change like I mean Junaid Akram my friend really said a wonderful thing about it. It's like change is not going to happen by hanging someone. yeah It's going to happen by co-education, sex education, you know, egalitarian हाँ policies के हाँ gender के जो gaps हैं और gaps हैं disparities हैं वो yeah सही करो, you know, and at least understand what the other like we also live in like this male oriented empathy thing. नहीं है Empathy empathy नहीं है or poverty also affects empathy. that's the thing too मतलब I don't know if you've like are you into sociology I'm into that a little bit. I've तो studied. तो कार्ल मार्क्स यही कहता है कि यार the rich are getting richer poor are getting poorer तो इसमें बात ही यही है and we can see it right here Yeah. ऐसे ही है The ऐसे ही हो रहा है the rigged the capitalistic system. yeah Yeah. What are you, communist? I am Karl Marx तो अच्छा लगा. Karl Marx I think I'm पता नहीं I know all the theories I don't know where I stand Me too. And I think that's the best academic spot to be standing in yeah because you just weigh things out और and you present them and then you know some people hold on to वो a theory. radicalism हो जाती है वो ना एक बड़े पैशन के फिर साथ आते हैं वो कहते हैं कि यही है. जहाँ पे ना बात ये नहीं होती जहाँ पे बात आपको सीखने की जगह होते बस यही है और कोई और आपको ओपिनियन दे रहा है और आप उसकी बात नहीं सुन सुन ही रहे नहीं रहे. हाँ. दैट्स वेयर इट एंड्स योर मतलब Conversation ही नहीं. कॉन्वर्सेशन ही नहीं है आप इतना रेडिकल होके उसको बात करोगे कि नहीं ये मैं हाँ. तो ऐसे नहीं चलता Yeah. यू नीड टू लिसन टू समवन एल्स फर्स्ट अगर उनका भी पॉइंट सुन लें तो कोई But मेरे लिए तो एक तरह से बीमारी भी रही है कि like I consider everything. हाँ So I'll be like, so you know, Karl Marx is like history. All of history is a series of class struggle, right? Yeah. And I'll be like, okay, sure, that's a way of going about it. And he's like, oh, you know, level it for everyone. सही So nobody's rich, nobody's poor, and like there are now new ways of. I listened to Taimur Rahman, who's a wonderful LUMS teacher who सही talks about communism, how it's evolved as well. But like you know, like the main thing was कि यार if I don't get prestige or more money out of working harder, why would I work harder? What would be my motivation? ये यही You know? होता है कि इफ आई एम मोस्टली लोग काम ही पैसे के लिए कर रहे हैं ना टू जस्ट अचीव समथिंग इन लाइफ Yeah. फिर हम आते हैं जो खुशी के लिए भी कर रहे हैं काम पैसे Acknowledgement के लिए भी कर रहे हैं. हाँ Yeah. आई थिंक इट्स ऑलवेज के आई डोंट नो इट्स सब अपना चला रहे हैं काइंड ऑफ Yeah. लेकिन बात फिर वही आती है कि रिच आर गेटिंग रिचर पुअर आर गेटिंग पुअर Yeah, and it's so strange. It plays in so many different ways. Like I know an amazing, wonderful director, and I do go to this like client meeting. वो सही। client meeting पे हम बैठे हुए हैं. मैं अंग्रेजी बोल देता हूँ थोड़ी सी. असर उसका नजर आता है कि यार इसको ज्यादा पैसे देने. या क्लास सिस्टम है ना. एब्सोल्युटली और वही इंडियन पोस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट अभी तक बैठा हुआ है कि ये जिसको जरा English थोड़ा आती पढ़ा है लिखा है but- वो इंग्लिश आएगा ले गया ज्यादा पैसे. ट्रू So there's a lot of these things, and I exploit it too, man. I mean, I'm a part of the system, so I kind of see myself as partly evil at times, but I Same. try to give back, and I True. think giving back maybe जन्नत में मेरे लिए जगह बन जाए फिर. इंशाल्लाह. लेकिन आई थिंक हर कोई एक्सप्लॉइट तो कर रहा है आई वुडंट से कि मैं भी एक्सप्लॉइट नहीं कर रही जहाँ पे फायदा दिखता है कर लेते हैं कर Yeah, तो लेते हैं and that's the urge. दैट्स द That's the अर्ज instinct is the desire to fulfill that particular urge is so within us that I kind of feel like कि मैं communism में totally कभी इतना नहीं घुस पाया. Even though like it at times just the breakdown of history just makes so much sense. इट मेक्स Like, सेंस that's what has been happening. But it's been happening. And then the other apathetic way of looking at it for me is like, I mean, I have empathy. I'm like, yes, and I get very angry when I find out कि किसी मर्द ने ये किया है, you know, and I've heard so many, because since I have female friends as well, they all bond with me, Yeah. you know, like I've had a lot of platonic हाँ, relationships.
they'll tell me what they go through. Then I hear it, and then I really want to change things, right? So it pisses me off when I see something like this. But at the same time, I'm like, मेरे पैदा होने से पहले का भी चल रहा था, मेरे मरने के बाद भी ये चलता रहेगा. True. तो That's then I the become sad apathetic. कि कुछ नहीं करना, but ठीक है, जाने कुछ दो. हो ही नहीं सकता. कुछ हो ही नहीं सकता. But that's the thing also, like I don't really share stuff. जो भी अगर हम बात ही कर लें इधर कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा होता है, like मतलब personally if comments कितने आ रहे होते हैं मुझे, और targeted comments आ रहे होते हैं, शक्ल पे आ रहे How do हैं. you react to those? That's a YouTuber dilemma. That's a YouTuber dilemma. मतलब I try to ignore it. पहले तो मैं बिल्कुल होती थी कि I don't give a shit. जो भी बोलना है बोलो. But slowly when the comments मतलब बढ़ जाते हैं ना, when you have a larger audience बढ़ी है तो haters भी बढ़ रहे हैं, you know. तो उधर से छोटी छोटी चीज़ें भी ना अब मुझे तंग कर रही होती हैं कि क्या मसला है. एंड कुछ लोग तो बहुत एक्सट्रीम पे जाके बोल देते हैं ना, वो तो सेल्फ एस्टीम ऐसे जाती है मेरी. Yeah, that Yeah. you know the solution, right? You have to be numb to them and not read them. Maybe it's मैंने hard to not read them. The first day I release a video, I'm also like refreshing. It's a thing like that. आप ना वो acknowledgement भी ढूंढ रहे होते हैं. सही है, you're वो एक आपको होना है ना कि पसंद आई कि नहीं आई, क्योंकि मुझे तो पसंद आ गई है, लेकिन जो देख रहे हैं उनको पसंद आ रही है कि नहीं. तो उन comments को देख रही होती हूँ, लेकिन फिर then this one comment comes कि ये क्या है अजीब सी, and then I go like तुझे किसने कहा देख? Do you respond like I've never responded to it, never. लेकिन because पहले मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था. अच्छा शुरू में तो because there weren't any female vloggers कह लें या. Yeah, you were the first. I wasn't the first. I wouldn't say Anusha Khan was the first. Like Okay. I know Anusha did like vlogs also. Okay. लेकिन मुझे बिल्कुल first female vlogger इसलिए कहते हैं. You're the first on my map, but go on. अच्छा मुझे हाँ भी first इसलिए कहते हैं because I just started just Doesn't for matter if you're the vlog. first, as I long as you don't- do well, yeah. right? It's a stupid term. So- Yeah, sorry. तो फिर ना क्या कहते हैं उसके बाद मैं बात ही भूल गई मैं क्या कह रही थी. When you first started, you didn't care about the comments. हाँ सही. तो बिकॉज इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नहीं होती थी, बस मेल डोमिनेंस थी यूट्यूब पे. फिर कमेंट्स आते थे कि तुम्हारी जगह तो किचन में, तुम्हारी तो अभी शादी नहीं होगी. अच्छा ये बहुत बहुत ज़्यादा आते थे मुझे ना. एंड इट वाज यूज्ड टू बी जस्ट ट्रोलिंग. कोई इतना सीरियस में नहीं हो रहा था, मतलब वो ट्रोल ही हो रहा था. यार ये लेकिन ट्रोल के भी दिल में कहीं बात बैठी हुई बात है. होती है ना, तभी वो बात हाँ. निकलती है अजीब. हाँ. कि आगे उनकी बहनें भी जाएंगी, तो उनके दिमाग में ही होता है ना कि अगर बहनें हैं तो वो भी यही करेंगी, किचन में ही जाएंगी. तभी Yeah. उनके कुछ तो इन्फोर्स्ड किया हुआ है ना उनके दिमाग में Yeah. ये कॉन्सेप्ट. तो जब मैं ये कमेंट्स पढ़ती थी ना, मुझे होता था मैं तो कभी किचन में नहीं जाऊंगी. आई थिंक Because you're a counterculturalist. मैं काउंटर करती हूँ ना. एंड ट्रस्ट मी, मैं पहले बहुत किचन में जाती थी, मैं बहुत खाने पकाती थी. नॉट लाइक खाने पकाती थी, बट लाइक रोटी खुद बना लेती थी. लेकिन अब तो भाई उस चीज़ के बाद ना मैं मजाल हो जो मैं मैगी नूडल्स के अलावा कुछ बनाऊँ. जस्ट नूडल्स, इट्स जस्ट नूडल्स दैट आई मेक, नथिंग एल्स. वो तो मैं भी बना लेता हूँ. आई थिंक इट्स द काउंटर वाली इंस्टिंक्ट इन me. Yeah, but this is also like a really unfair situation. I think our gender roles in our society जो stereotypes से थोपे हुए हैं ना, और वो Yep. बार-बार reinforce होते जा रहे हैं. तो वो I mean चुड़ैल्स देखा है? नहीं देखा मैंने अभी. यार I don't know if you're into series, but I really loved it. Everyone loved it. Literally. Oh yeah? Okay. Just मैं the thing is कि मैं ना अभी थोड़ा ऑफ हुई हुई थी वीडियोस और वीडियो कंजम्पशन से. मैं रीडिंग में थोड़ी घुसी हुई हूँ. एंड now I'm gonna go watch it. So that show does this, which kind of shows कि आप कितना मैं सही. मोमो के ऊपर stereotype डालता जाऊंगा सही. कि वर्ल्ड में कहेगी चल है मैंने नहीं करना. हाँ. So that radical reaction comes, right? You counter it. हाँ. And when you counter it और इतने सालों की suppression होगी तो कितना फट के आता हट है. के आता है. तो वो उसमें वो फटते हुए दिखाया फटता है. है. और वो बहुत अच्छा फटता है. और मैं बहुत satisfied था कि इसके साथ भी ये होना चाहिए, उस मर्द को भी यूं करना चाहिए. चलो और वो सारा होता है उनके साथ. I need to watch it. What's your future plan? पता नहीं. Honestly, I always thought कि मेरा एक future plan होगा कि मैं psychology पढ़ूंगी और फिर मैं एक psychologist बनूंगी. But now things have changed a bit. I Really? think YouTube पे तो अभी मैं लंबी break लूंगी. I know that for sure.
I think that's not a bad idea, actually. Yeah, I don't know. Even though as a YouTuber, I want to say stay in our community and everything. But I think this reading thing, and you clearly are तभी taking तो a year off I'm and thinking recalibrate. of really getting into kickboxing. That's not a बस bad idea either. उसको बस इतना Churels might inspire you because one of the main characters is, Really? is a boxer. Yeah. बस अब तो अब चुड़ैल्स देखना पड़ेगा मुझे. खैर Kickboxing and yeah different. अभी I'm rediscovering myself. अभी मैं ना YouTube को इसीलिए साइड पे किया हुआ है just to rediscover myself because continuous 4 सालों से बस मैं गधे की तरह बनाए जा रही हूँ videos. you've been consistent. There's a work ethic that's involved. हाँ I can't imagine. मैं तो free हूँ ना. मैं तो खाली ये कर रहा हूँ. हाँ You're studying and doing this at the same time. I was and जब अब मैंने break ले लिया ना it's just for me. I need to get like I need to just I don't know self aware करना है अपने आप को कि क्या मसले थे मेरे अंदर. रीडिस्कवर करूँ मैं अपने आप को कि और भी चीज़ें तुम्हें पसंद आ सकती हैं सिर्फ YouTube ही नहीं कि तुम घुसी रहो उसमें बिकॉज आई थिंक वो स्पार्क फिर ख़त्म हो जाता है और YouTube का content might evolve into something else. It Who will knows, most right? definitely Even if you come back to it, Yeah. I hope you I will. think मूरो के ख्यालात टाइप हो जाएगा. वो तो मुझे कोरोना ने किया. I couldn't travel anymore, so I had to True. stay at home. But I think it's great, and whatever you do after this recalibration, self-reflective phase of yours, when you do come back, I know you're going to show us and Inshallah. that what can really be done and how things people really do evolve I because hope I've seen it. because I need to like मैं ना चाहती हूँ मैं भी अगर अपने आप को मदद करी हूँ ना तो लोगों को भी एंड में मदद करूँ. लाइक आई नीड टू पास ऑन व्हाट आई हैव लर्नड एज वेल. ये नहीं है कि मैं कुछ हूँ और मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कोई सीख लिया है लेकिन आई नो पीपल विल गेट सम हेल्प. और अगर मैं जैसे सिचुएशन से गुजर रही हूँ अगर उस टाइम पे कोई यूट्यूबर अभी फॉर एग्जांपल इफ आई फाइंड अ यूट्यूबर हु इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग आई वुड मैं बस उसकी ही वीडियोस देखती रहूँगी बिकॉज इट वुड बी लाइक अ हेल्प. Yeah. रिलेट कर रही हूँ. Relation. Yeah. Let's see. Well, thank you so much, Momo, for coming down. मैं Means a बहुत lot. एक्साइटेड थी आज. मैं भी बहुत excited था आज. All of my friends are very excited. अभी हम autograph लेंगे. सारे दोस्तों का like you need to give me like 10 autographs today. Done. Your friends are always welcome in this place. You can बस. just give them their best.